Lesson 03. Dark, they were and golden-eyed. गहरे रंग वाले और सुनहरी आंखों वाले लोग। Dark they were and golden-eyed, गहरे रंग वाले और सुनहरी आंखों वाले लोग। ये एक साइंसी अफसाना है और इसके दूसरे हिस्से की ट्रांसलेशन में खुशामदीद। Hello, Harry, said everyone. Look, he said to them. You did hear the news the other day, didn't you? They nodded, to move your head in affirmative, and laughed. Sure. Sure, Harry. What are you going to do about it? Do, Harry, do? What can we do? Build a rocket, that's what. A rocket, Harry? To go back to all that trouble? Oh, Harry. But you must want to go back. Have you noticed the peach blossoms, the onions, the grass? Why, yes, Harry, seems we did, said one of the men. Doesn't it scare you? Can't recall that it did much, Harry. Idiots. Now, Harry. Bittering wanted to cry, you've got to work with me. If we stay here, we'll all change. The air. Don't you smell it? Something in the air. A Martian virus, maybe, some seed, or a pollen. Listen to me. They stared at him. हेलो हैरी, सबने कहा। देखो, उसने उनसे कहा, तुमने दूसरे दिन खबर सुनी थी ना? उन्होंने सर हिलाया और हंसे। ज़रूर ज़रूर हैरी, तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? करो हैरी, करो। हम क्या कर सकते हैं? एक रॉकेट बनाएं। बस एक रॉकेट हैरी, इस तमाम मुसीबत पर वापस जाने के लिए। ओह हैरी, लेकिन आप ज़रूर वापस जाना चाहते हैं। क्या आपने आड़ू के फूल, प्याज, घास को देखा है? क्यों? हाँ हैरी, लगता है हमने ऐसा किया, मर्दों में से एक ने कहा। क्या ये आपको खौफज़दा नहीं करता? याद नहीं है कि इसने बहुत कुछ किया? हैरी बेवकूफ़। अब हैरी तल्ख़ रोना चाहता था। तुम्हें मेरे साथ काम करना है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम सब बदल जाएंगे। हवा, क्या आपको इसकी खुशबू नहीं आती? हवा में कुछ मरीज़ का वायरस हो सकता है, कुछ बीज या एक जर्ग। मेरी बात सुनो। उन्होंने उसे घूरा। Sam, he said to one of them. Yes, Harry? Will you help me build a rocket? Harry, I got a whole load of metal and some blueprints, sketches. You want to work in my metal shop on a rocket? You're welcome. I'll sell you that metal for $500. You should be able to construct a right pretty rocket, if you work alone, in about 30 years. Everyone laughed. Don't laugh. Sam looked at him with quite good humor. Sam, Bittering said, your eyes. What about them, Harry? Didn't they used to be grey? Well, now, I don't remember. They were, weren't they? Why do you ask, Harry? सैम, उसने उनमें से एक से कहा। हाँ हैरी, क्या आप रॉकेट बनाने में मेरी मदद करेंगे? हैरी, मेरे पास धात का पूरा वज़न और कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं। आप मेरी धात की दुकान में रॉकेट पर काम करना चाहते हैं? आपका इस्तकबाल है। मैं तुम्हें वो धात $500 में बेच दूंगा। अगर आप अकेले काम करते हैं तो तकरीबन 30 सालों में आपको एक सही खूबसूरत रॉकेट बनाने के काबिल होना चाहिए। सब हंस पड़े। हंसो मत, सैम ने उसकी तरफ बड़े तंज़िया अंदाज में देखा। सैम, बिट्रेंग ने कहा, आपकी आंखें, उनका क्या होगा हैरी? क्या वो सरमई नहीं होते थे? अच्छा, अब मुझे याद नहीं, वो थीं। क्या वो नहीं थीं? तुम क्यों पूछते हो, हैरी? Because now they're kind of yellow-colored. Is that so, Harry? Sam said, casually. And you're taller and thinner. You might be right, Harry.
Sam, you shouldn't have yellow eyes. Harry, what color of eyes have you got? Sam said. My eyes? They're blue, of course. Here you are, Harry. Sam handed him a pocket mirror. Take a look at yourself. Mr. Bittering hesitated, and then raised the mirror to his face. There were little, very dim flecks, a small mark or spot, of new gold captured in the blue of his eyes. Now look what you've done, said Sam, a moment later, you've broken my mirror. Harry Bittering moved into the metal shop and began to build the rocket. Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices. Once in a while they gave him a hand on lifting something. But mostly they just idled, to spend a period of time relaxing and doing very little, and watched him with their yellowing eyes. क्योंकि अब वो पीले रंग की हैं। क्या ऐसा ही है? हैरी सैम ने इत्तफाक से कहा, और तुम लंबे और पतले हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो हैरी। सैम, आपकी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए। हैरी, तुम्हारी आंखों का क्या रंग है? सैम ने कहा, मेरी आंखें यकीनन वो नीली हैं। यहाँ तुम हो हैरी, सैम ने उसे जेब का आईना दिया। अपने आप पर एक नज़र डालो। मिस्टर बिटरिंग ने हिचकिचाहट के साथ, और फिर आईना अपने चेहरे पर उठाया। उसकी आंखों के नीले रंग में नए सोने के छोटे बहुत मध्यम धब्बे थे। अब देखो तुमने क्या किया, सामने एक लम्हे बाद कहा, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मर्द खुले दरवाजे में खड़े हो गए और आवाज़ बुलंद किए बगैर बातें और मजाक किया। थोड़ी देर में उन्होंने उसे कुछ उठाने पर हाथ दिया, लेकिन ज़्यादातर वो सिर्फ बेकार रहते थे और उसे अपनी पीली आंखों से देखते थे। It's supper time, Harry, they said. His wife appeared with his supper in a wicker, made of very thin pieces of wood twisted together, basket. I won't touch it, he said. I'll eat only food from our deep freeze. Food that came from Earth. Nothing from our garden. His wife stood watching him. You can't build a rocket. I worked in a shop once, when I was 20. I know metal. Once I get it started, the others will help, he said, not looking at her, laying out the blueprints, an early plan. Harry, she said, helplessly. We've got to get away, Cora. We've got to. Summer burned the canals dry. Summer moved like flame upon the meadows. In empty earth settlement, the painted houses flacked and peeled. Rubber tires upon which children had swung in backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing, hot air. ये रात के खाने का वक्त है हैरी, उन्होंने कहा। उसकी बीवी रात के खाने के साथ एक बैद की टोकरी में नमूदार हुई। मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने कहा। मैं सिर्फ हमारे डीप फ्रीज से खाना खाऊंगा। ज़मीन से आने वाली खुराक, हमारे बाग से कुछ नहीं। उसकी बीवी खड़ी उसे देख रही थी। आप रॉकेट नहीं बना सकते। मैंने एक बार एक दुकान में काम किया जब मैं 20 साल का था। मैं धात जानता हूँ। एक बार जब मैं उसे शुरू कर दूंगा, दूसरे लोग मदद करेंगे। उसने इब्तदाई मंसूबा बताते हुए उसकी तरफ ना देखते हुए कहा। हैरी, उसने बेबसी से कहा, हमें दूर होना पड़ेगा। कोरा, हमें मिलना है। गर्मियों ने नहरों को खुश्क कर दिया। मौसम गर्मा घास के मैदानों पर शोले की तरह मुंतकिल हुआ। खाली ज़मीनी बस्ती में पेंट किए हुए मकानात फटे और उनके छिलके उतरे हुए। रबड़ के टायर जिन पर बच्चों ने पिछले सैन में झूले झूले थे, चलती हवा में रुके हुए घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए थे। At the metal shop, the rocket frame began to rust. In the quiet autumn Mr. Bittering stood, very dark now, very golden-eyed,
upon the slope above his villa, looking at the valley. "It's time to go back," said Cora. "Yes, but we're not going," he said quietly. "There's nothing any more." "Your books," she said. "Your fine clothes. The down's empty." "No one's going back," he said. "There's no reason to, none at all." The daughter wove tapestries, decorative cloth, and the sons played songs on the ancient flutes, a tube-shaped musical instrument with a hole, and pipes, their laughter echoing in the marble villa. धात की दुकान पर रॉकेट के फ्रेम को जंग लगने लगा। पुरसुकून ख़ज़ां में मिस्टर बिटरिंग खड़े थे, अब बहुत तारीक, बहुत सुनहरी आंखों वाले, अपने विला के ऊपर की ढलवान पर वादी को देख रहे थे। "ये वापस जाने का वक्त है," कारा ने कहा। "हाँ, लेकिन हम नहीं जा रहे," उसने खामोशी से कहा। "अब कुछ नहीं है। आपकी किताबें," उसने कहा, "तुम्हारे अच्छे कपड़े, नीचे खाली है, कोई वापस नहीं जा रहा है।" उन्होंने कहा, "कोई वजह नहीं है, कोई भी नहीं।" बेटी टेपेस्ट्री बुन बुनती थी और बेटों ने कदीम बांसुरी और पाइपों पर गाने बजाने शुरू कर दिए थे। उनकी हंसी मार्बल विला में गूंजती थी। Mr. Bittering gazed at the earth settlement far away in the low valley. Such odd, such ridiculous houses the earth people built. They didn't know any better, his wife mused, thought. Such ugly people. I'm glad they've gone. They both looked at each other, startled by all they had just finished saying. They laughed. Where did they go, he wondered. He glanced at his wife. She was golden and slender as his daughter. She looked at him, and he seemed almost as young as their eldest son. "I don't know," she said. "We'll go back to town maybe next year, or the year after, or the year after that," he said, calmly. "Now, I'm warm. How about taking a swim?" They turned their backs to the valley. Arm in arm they walked silently down a path of clear running spring water. मिस्टर बिटरिंग ने नीचे की वादी में बहुत दूर ज़मीन की बस्ती को देखा। ऐसे अजीब, ऐसे मुज़ीक़ाखेज़ घर ज़मीन के लोगों ने बनाए हैं, वो इससे बेहतर नहीं जानते थे, उसकी बीवी ने सोचा। ऐसे बदसूरत लोग, मुझे खुशी है कि वो चले गए हैं। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। जो उन्होंने अभी कह दिया था, वो हंसे। वो कहाँ गए, उसने सोचा। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। वो उसकी बेटी की तरह सुनहरी और पतली थी। उसने उसकी तरफ देखा और वो उनके बड़े बेटे की तरह जवान लग रहा था। "मैं नहीं जानती," उसने कहा, "हम शहर वापस जाएंगे, शायद अगले साल या 1 साल बाद, या इसके 1 साल बाद।" उसने सुकून से कहा, "अब मैं गर्म हूँ। तैराकी लेने के बारे में क्या ख्याल है?" उन्होंने वादी की तरफ मुंह मोड़ लिया। बाजुओं में वो खामोशी से बहते चश्मे के साफ पानी के रास्ते पर चल पड़े। 5 years later, a rocket fell out of the sky. It lay steaming in the valley. Men leaped out of it, shouting, "We won the war on Earth. We're here to rescue you. Hey!" But the American-built town of cottages, peach trees, and theaters was silent. They found a half-finished rocket frame, rusting in an empty shop. The rocket men searched the hills. The captain established headquarters in an abandoned, left by the owner, bar. His lieutenant came back to report. "The town's empty, but we found native life in the hills, sir. Dark people. Yellow eyes. Martians. Very friendly. We talked a bit, not much. They learn English fast. I'm sure our relations will be most friendly with them, sir." "Dark, eh?" mused the captain. "How many?" 5 साल बाद एक रॉकेट आसमान से गिरा। ये वादी में भाप पड़ी थी। मर्द चीखते हुए उससे बाहर निकल आए। "हमने ज़मीन पर जंग जीत ली।
ہم آپ کو بچانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ارے لیکن کاٹیجز، آڑو کے درخت اور تھیٹروں کا امریکی تعمیر کردہ شہر خاموش تھا۔ انہیں ایک خالی دکان میں زنگ آلود راکٹ کا ایک آدھا تیار فریم ملا۔ راکٹ والوں نے پہاڑیوں کو تلاش کیا۔ کپتان نے ایک لاوارث بار میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ اس کا لیفٹیننٹ رپورٹ کرنے واپس آیا۔ قصبہ خالی ہے، لیکن ہمیں پہاڑیوں میں آبائی زندگی ملی ہے جناب، سیاہ لوگ، پیلی آنکھیں، مریخ، بہت دوستانہ۔ ہم نے تھوڑی بات کی، زیادہ نہیں۔ وہ انگریزی تیزی سے سیکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہوں گے جناب۔ اندھیرا کپتان کو پریشان کر دیا۔ کتنے؟ 600–800, I'd say, living in those marble ruins in the hills, sir. Tall, healthy, beautiful women. Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement? Lieutenant? They hadn't the foggiest notion, belief or idea, of what happened to this town or its people. Strange. You think those Martians killed them? They look surprisingly peaceful. Chances are a plague, epidemic disease, did this town in, sir. Perhaps. I suppose this is one of those mysteries we'll never solve. One of those mysteries you read about. 600-800 میں کہوں گا ان پہاڑیوں کے سنگ مرمر کے کھنڈرات میں رہ رہے ہیں جناب۔ لمبی، صحت مند، خوبصورت عورت۔ کیا انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس زمینی بستی کو بنانے والے مردوں اور عورتوں کا کیا ہوا؟ لیفٹیننٹ، انہیں اس قصبے یا اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا سب سے دھندلا خیال نہیں تھا۔ عجیب، آپ کو لگتا ہے کہ مریخ والوں نے انہیں مارا؟ وہ حیرت انگیز طور پر پرامن نظر آتے ہیں۔ اس شہر میں طاعون کی وبا ہونے کے امکانات ہیں جناب۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ ان رازوں میں سے ایک ہے جسے ہم کبھی حل نہیں کریں گے، ان پراسرار رازوں میں سے ایک جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں۔ Happy learning.